Hello, students. Today we are going to look at the question and answer of chapter Black Beauty. ओके, तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर दो पार्ट्स में है, एक है ब्रीफ टाइप, एक है लॉन्ग टाइप। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स आंसर द क्वेश्चंस दैट आर ब्रीफ, शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर्स। ओके, व्हाट डज ब्लैक ब्यूटी रिमेंबर अबाउट हिज अर्ली होम। तो ब्लैक ब्यूटी को अपने पहले के घर के बारे में उसकी क्या यादें हैं। His early home was a meadow that had a pond of clear water. There were shady trees around the pond. Water lilies grew at the far end. On the other side of the hedge was his master's house. तो ये है क्वेश्चन नंबर वन का आंसर। हाउ वॉज ब्लैक ब्यूटी फेड व्हेन ही वॉज वेरी यंग। जब ब्लैक ब्यूटी बहुत ही छोटा था तो उसको वो क्या खाया करता था। ठीक है, ही वॉज फेड ऑन हिज मदर्स मिल्क। क्वेश्चन नंबर थ्री, हु वॉज डचेस। वॉट काइंड ऑफ वर्क डिड शी डू। डचेस कौन थी, वो क्या काम करती थी। डचेस वॉज ब्लैक ब्यूटीज मदर। शी यूज टू पुल हर मास्टर्स कैरेज। क्वेश्चन नंबर फोर, वॉट डिड ब्लैक ब्यूटीज मदर टेल हिम अबाउट हिज ग्रैंड पेरेंट्स। तो जो ब्लैक ब्यूटी थी, ब्लैक ब्यूटी की माँ थी, उसने ब्लैक ब्यूटी को क्या कहा उसके ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में। ठीक है, she told him that his grandfather was a famous racehorse. His grandmother had a very sweet temper. जो उसका ग्रैंडफादर था वो एक बढ़िया रेस हॉर्स था, और जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो स्वीट टेम्पर की थी। ठीक है, कंपोज काम एंड कूल रहती थी। व्हाट डज ब्लैक ब्यूटी से अबाउट हिज मदर। तो ब्लैक ब्यूटी ने अपनी माँ के बारे में क्या कहा। He says that her mother was a wise old mare, her master loved her dearly. What does Black Beauty remember about his first master? तो जो ब्लैक ब्यूटी था वो उसे क्या यादें थी, उसकी क्या यादें थी जो पहले का जो उसका मास्टर था। ठीक है, he says that his first master was a very kind and gentle person. He loved his horses like his own children. He gave them good food and lodging. Who was Darky? How did he feel when he was broken in? डार्की कौन था और उसको कैसा महसूस हुआ जब उसको ट्रेनिंग दिया गया या उसको डिसिप्लिन किया गया, अनुशासित किया गया। डार्की was the nickname given to Black Beauty by his first master. He felt very terrible when he was broken in. तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जब उसको broken in किया गया और ट्रेनिंग दी गई। How did Black Beauty get his name? जो ब्लैक ब्यूटी है उसका नाम ब्लैक ब्यूटी कैसे पड़ा। डार्की was sold to Square Garden. He and his wife wanted to give him a new name. They thought of many names and finally agreed on Black Beauty. Question number 9. Who were Ginger and Mary Legs? ठीक है, ये Mary Legs, ये जो स्पेलिंग है थोड़ा सा गलत है, तो यहाँ पर Mary Legs है। ठीक है, आंसर है जिंजर एंड मैरी लेग्स वर टू अदर हॉर्सेस इन स्क्वायर गार्डन्स स्टेबल। तो ये जो जिंजर और मैरी लेग्स थे ये अदर टू हॉर्सेस थे। अब है क्वेश्चन आंसर्स दैट आर लिटिल बिगर। ठीक है, थोड़े से बड़े वाले क्वेश्चंस है, उसका आंसर भी थोड़े से बड़े शब्दों में होगा। सो आंसर ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट एडवाइस डिड डचेस गिव टू डार्की। डार्की ने जो डचेस थी उसने डार्की को क्या एडवाइस दिया। Duchess was Darky's mother. She wanted Darky to grow up into a good and gentle horse. She gave him examples of his father, his grandfather, and his grandmother. She said to him, never learn bad ways. Always do your work in a spirit of goodwill. Never bite or kick, even in play. Lift your feet well up when you trot. तो ये एडवाइस उसे दिया था। क्वेश्चन नंबर 2,
What do you know about Square Gordon and his wife? स्क्वायर गॉर्डन और उसके वाइफ के बारे में आप क्या जानते हैं? Square Gordon was Darky's second master. He was as good as his first master. His wife too was a very good lady. They gave Darky the name of Black Beauty. Darky was very happy living with them, but then his mistress felt ill and died. Square Gordon sent Black Beauty to live with one of his friends. Question number third. How did the happy days of Black Beauty come to an end? जो Black Beauty था उसके जो अच्छे दिन थे खुशी के दिन थे वो कैसे एंड हुए कैसे खत्म हुए Square Gordon's wife fell ill and died. Now Black Beauty was sent to live with a friend of Square Gordon. Unfortunately, his new mistress was a cruel lady. तो जो नई जो मिस्ट्रेस थी अच्छी नहीं थी शी वॉज वेरी प्राउड एंड थॉटलेस शी मेड लाइफ क्वाइट हार्ड फॉर ब्लैक ब्यूटी thus the happy days of black beauty came to an end he often thought of the loving square gordon and his wife so this was the last question of this chapter